जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका स्वागत है। द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड डिवाइन बुक, जो कि कमलेश मेहता आंटी जी ने लिखी थी, उसकी रीडिंग पिछले 3 महीने से हम लोग गुरु जी की आज्ञा से इस सेशन इस प्लेटफॉर्म से करवा रहे हैं एवरी संडे। तो उसी श्रृंखला में आज अन्नू माटा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि असाइंड पेजेस को रीड करेंगी। और इससे पहले कि मैं अन्नू आंटी जी का स्वागत करूं, मैं सबसे पहले कमलेश मेहता आंटी जी का स्वागत करता हूं। ओवर टू यू कमलेश मेहता आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि पिछले 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और यू आर ऑन द बेड रेस्ट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। आप में इस सेशन में आज आई हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। सब गुरु परिवार आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे और गुरु महाराज की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ जल्दी से हो जाएं। और आज जो आप इस सेशन में आई हैं, मुझे हमें सबको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जय गुरु जी आंटी। आंटी आज अन्नू आंटी जी आई हैं संगत के अपना संगत के लिए, जो कि असाइंड पेजेस रीड करेंगी। तो ओवर टू यू नीलम आंटी। नीलिमा आंटी, कमलेश मेहता आंटी जी को और अन्नू आंटी जी का स्वागत करते हुए सेशन स्टार्ट करवाएं प्लीज। ओवर टू यू नीलिमा आंटी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। अंकल मेरी वॉइस आ रही है? यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कमलेश आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका आने का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी द मल्टीलिंगुअल ग्रुप पे। हम सब आपकी हर संडे को ईगरली वेट करते हैं कि आप आए और जो इतनी प्यारी ब्लिसफुल बुक गुरुजी ने आपसे लिखवाई है, जिसमें आपके इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग्स हैं, जिनको पढ़ते हुए एक्चुअली में हमें गूज बम्प्स हो जाते हैं और ऐसा लगता है। और आंटी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो हर एक संगत ने मेरे साथ में शेयर किया है गुरुजी की कृपा से, कि आपकी बुक के जो भी पेजेस असाइंड हैं, जो गुरुजी ने रीडर्स को असाइन करे हैं, उन सबके साथ वो सिचुएशंस चल रही होती हैं, और जिसको दुनियावी टर्म्स में कोइंसिडेंस कहा जाता है, और गुरुजी की दुनिया में तो वो कोइंसिडेंस है ही नहीं। इट एक्चुअली मैचेस विद दैट सिचुएशन। आई मीन इट इज so magical moment I should say, or I don't know the correct word. गुरुजी की कृपा से वो कैसे चीज बिल्कुल मैच हो जाती है, और वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने अपनी इतनी प्यारी सी बुक में लिखे हैं, वो सारे के सारे मैच करते हैं। व्हेन we all are reading those lines, those beautiful moments, we actually live those moments as if a film is going on in front of you. And the director, our प्यारे गुरुजी, writer is Kamlesh aunty ji, and we all are the characters who are playing that role. इट इज सच अ ब्यूटीफुल बुक। और जब भी आप आते हैं आंटी, इतना अच्छा लगता है कि उस सेशन के अंदर में उस दिन पूरी जान आ जाती है। एंड आई प्रे कि गुरुजी आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। द काइंड ऑफ स्पिरिट, द काइंड ऑफ प्यार आप जो शो करते हैं अपने वर्ड्स में, अपने एक्सप्रेशंस में, अपने सत्संग जब आप शेयरिंग करते हैं, मतलब इट लुक्स लाइक कि हम सुनते रहें और ये समा कभी भी थमे नहीं, ये कभी भी सेशन ना थमे। संडे की ऐसे ईगर वेटिंग हो रही थी, और जब आप आ जाते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है आंटी जी। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने आपको ये गाइडेंस दी, कि आपने वो प्यारे मोती पिरोए शब्दों में, और आज हम उन्हीं को पढ़ करके एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। और एक हमारे अंदर भी हिम्मत आ जाती है जब वो चैप्टर असाइंड आता है हमारे पास, तो ऐसा लगता है कि वाओ, ये तो मुझे ही चाहिए था। लास्ट टाइम भी सुदेशना आंटी के साथ ऐसे ही हुआ, मेरे साथ बहुत बारी हुआ, सीमा कुमार आंटी जी के साथ हुआ, और आज जो असाइंड पेज है कि गुरुजी गिव्स यू एट अ प्रॉपर टाइम, what I was having in my mind was actually the same thing, and throughout the week I was getting the same messages related to the topic only. So many thanks
कमलेश आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका कि आपने ये मोती पिरोए और हमारे को एक मौका गुरुजी ने दिया कि हम ये रीडिंग्स कर सके और हम ये कानों से उस चीज को सुन सके। बहुत बहुत स्वागत आपका कमलेश आंटी जी। और आज का टॉपिक सत्संग का जो रीड करने जा रहे हैं वो है अंजू अरुण माटा आंटी। अंजू आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सत्संग का भी संगत आई हुई का भी बहुत बहुत स्वागत है। Anju Aunty ji, you can please unmute yourself, and before that, Kamlesh Aunty ji, I would like you to please kindly pour in your blessings to all of us. जय गुरु जी। गुरु Jai जी Guru की ji प्यारी Aunty. गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। गुरु जी, संगत जी, আমি তোমার সবকে বল অনেক ভালোবাসি। In Bengali it is said, yeah, I love you people so much, and I love my sangat. I love Guruji's sangat, and I always mention गुरु को प्यार करने से पहले गुरु की संगत को प्यार करो, गुरु अपने आप प्यार करने लग पड़ेगा। And this is my motto in my life, to love each and every sangat, each and every sangat. And कोई भी मुझे कहता है कि हम पहली बार सत्संग करा रहे, मैं तो वहां छल्लों की तरह भागती हूँ कि हाय, कोई गुरु जी को जोड़ा है, कोई गुरु जी के साथ जुड़ा है। और हमारे जमाने में हम एक एक घर में जाके लोगों को बोलते होते थे कि ऐसे हमारे गुरु जी हैं, ऐसे है, वैसे है। कोई जुड़ने को तैयार ही नहीं था। बहुत ऊट पटांग बातें की जाती थी। एंड कोई बात नहीं, हमने तो अपने गुरु के लिए गालियां भी सुनी एंड बुरा नहीं लगा। इसलिए अब जो भी कोई संगत कहती है हम पहली बार जा रहे हैं, वो कहते हैं कि सिर पे पांव रख के जब भागते वैसे मैं भागती। And I want to be reach the earliest to guide them and how to go about. That is motto of my life. Jai Guruji. Thank you so much, Nilimanji. Jai Guru ji Aunty, thank you so much for the beautiful, beautiful words. Thank you so very much for the blessings, Aunty. We really love you, and we really love Guruji like anything. और टाइम ना लेते हुए अंजू आंटी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ द ब्यूटीफुल डिवाइन बुक द फ्लावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, and let's all Sangaji pour their flowers of gratitude in the lotus feet of Guruji. Anju aunty, I welcome you from the platform's behalf. Please unmute yourself. Yeah, I've already unmuted. Thank you. Yeah, Jai Guruji aunty, please carry on. Yeah. Thank you. Yeah. Jai Guruji. Thank you, Guruji, for giving me this opportunity and giving me this seva. Today, when I heard that Kamlesh Aunty is coming, because I knew that she was not feeling well for a number of days. And yesterday, Suresh Vasan uncle called me, and that time the satsang was going on in my house. And I was not, checking the phones because the satsang I had kept for my son's birthday. And I had invited the Kamlesh auntie also, and I asked Rajneesh uncle, please bring Kamlesh auntie also. So when he came and auntie didn't come, he was telling me that auntie is not feeling well nowadays, and that's why she hasn't come. So I was a little disappointed because I love her too much. Like she's like second mother. So and she knows it that I love her too much. Whenever we meet, I just hug her. I can't hold myself.
But when today I saw Kamlesh Aunty is coming in this forum and you welcomed Suresh Uncle, welcomed her, I was so happy to see. This is also one of the satsang for me, that I was so keen to have her in my house, in my satsang, family satsang, home satsang. She couldn't come, but today I'm talking to her and listening her and getting her blessings through this platform. Thank you so much for having me, and thank you, Kamlesh Aunty, for joining today. I know you're not keeping well, so we all wish you a good health and wishing a great recovery, sooner recovery. So with that, um, I would now start the chapter, which is, as Auntie was saying, Guruji gives you at a proper time. So let me do the reading. It says, "You never know where a blessings can come from," and this is in quotes. And again, there is a complete chapter around this particular line, which quote which Auntie has written. So it expressed like that: when you ask something to God or your Guruji, it may happen that you may not get it at the time. Rather, it comes to you when the time is right. So one must not be disheartened. You must have faith in Him that only the best would come to you at the right time. So here the focus is primarily focusing on your wishes and just trust God. Whenever the time would be there, you will get the things on the right time. Book mentions, I will tell you one incident. So this is an incident which Auntie ji has written, where the ways of blessings and the timings of blessings became clear to me. I learned that Guruji Maharaj often gives you what is best for you. He gives you much more beyond your expectations. Guruji Maharaj, it is much far sighted than what we can even think of. We often ask for only worldly gains, but sometimes He offers us what we can never think of in our imagination. One day, I went to Guruji Maharaj with a box of sweets on my uncle's promotion. My uncle has become a squadron leader. Guruji Maharaj already knew everything about the promotion as usual, but he still asked me, "Who is squadron leader?" I explained to him that army terminology as he was much familiar with it. So I told Guruji Maharaj that he had become a major equivalent in army. After that, he will be lieutenant colonel, colonel, brigadier, lieutenant general, and then general. He asked me a strange question, whose answer gave me a lot of clarity regarding my various spiritual development questions. Okay, so can't he directly become general? He asked with a childlike curiosity. So in a way, he asked, why can't he become general directly from left squadron leader? I said, no, Guruji, we reach that height only with experience. This year's long in gathering knowledge will make us reach that height of career, I said. He further explained to me the logic of things in a very interesting manner. If you will give the MBA books to a child, he will not understand it. He will have to reach that level to understand the MBA knowledge. In the same way, as you join Guruji Maharaj for the first time, you are in his KG class. He takes our exams and makes us pass from one level to another level. And then Auntie Ji has written a quote of Charles Dickens: reflect upon your present blessings, of which every man has many, not on your past misfortunes, of which all men have some. It's a beautiful quote Auntie has written in this chapter, and that's end the chapter reading for 38 and 39. But I would like to add something on this particular chapter, which I think is a little explanation what Auntie has mentioned. And I was talking to my husband today while after reading the chapter. I was saying that very beautifully Auntie has explained in the book that you go to KG and then you go to nursery, and then you go to next level, first, second, third. And that's why when you connect with Guruji and we start asking why it is not happening with me, why it is not happening with me, then my uncle, my husband actually told me we are actually pre-KG. We are still waiting for the admission to happen. The way we are, the stage we are in, it's longer for us to reach at that level. So in a way, I really enjoyed his thoughts that he himself realized that we are a very, very early nascent stage. It's too far journey we need to cover. So we should not be so impatient.
So let me give my own perspective. As you know, we all want good things to happen in our lives, but too often we want it now, not later. Most of us need to grow in the area of trusting Guruji instead of focusing on when question. And this is the question which Auntie tried to give us through her book. If you're missing joy and peace, you will not trust Guruji. If your mind feels worn out because of all the stress and conditions we are living in, we'll stop trusting Guruji. Sometimes I believe knowing everything can be very uncomfortable and can even hurt you. And I let me share some of the people actually reaching out to Pandit are asking for what will happen to my future. Will I get promotion? Will this would happen to me when I'll get my house? So we go to Pandits asking for these kind of questions. Have you ever thought when he says, or he would say that no, it's not going to happen, you will never have house, you will never have a car, or you will never get promotion, what will you will feel about it? You'll be more hurt than sitting in the present situation. So it's very important that we should not start asking for when things would happen. We'll have to stop this question from our mind. When we'll have to simple start trusting God whenever the right time would be, basis our own karmas and Guruji's wishes, we will get everything on time. So it's important that we trust Guruji. The second thing I want to add here, we always want positive change in our life. I've never seen people say that I need more pains in my life. We always want positive change in our life, but we don't want to go through the waiting process. That is also very interesting phenomena. When we wait, we become more patient. And there are two ways to wait it. One way of waiting is a wrong way waiting, and the second way of waiting is a very good way waiting. Wrong way waiting, actually you become impatient, you become miserable, you keep on complaining things, but you're waiting. The second kind of waiting is then you have a trust and faith on Guruji, you become more patient, you become more calm. So that's a third learning I've learned after reading this chapter. As we develop patience, our relationship with God or Guruji becomes very, very progressive change. Guruji gives us hope and dreams for certain things to happen in our lives. So it's important that hope remains with us. We're always wishing the good thing would happen soon. So wait in a right way. There are times when we might give up. I know there are times when we are actually very, very stressed. If you know how long it is going to take. But when we accept Guruji's timing, we can learn to live in hope and enjoy our lives while Guruji is working on our problems. We know that Guruji's plan for our life is good. And when we entrust ourselves to him, we can experience total peace and happiness. So that's the three learning I have, after reading this book and this particular chapter and all the experiences. I keep on chatting with a lot of Guruji Sangat and they keep on cribbing why it is not happening with me and why it is happening with somebody else. I keep on hearing that unka cancer theek ho gaya, unka ye problem theek ho gaya, when will happen to me? So the answer actually I give it, when this can happen to them, it can happen to you also. It's just the timings are not correct. And this is the chapter when I received today. Yesterday only I was talking on the same, I think around 2 a.m. in the night, I was talking to one Sangat and we were discussing this only. When things can happen for X person, it can happen to you also. Just wait and watch and have patience, develop patience. And I got this reading, this chapter. I received a call from Auntie Ji that will you be reading that chapter. So after this reading this book, three learning, sometimes knowing everything can be uncomfortable and even can hurt you. Second thing, if you want positive change in our life, please then make our learning process or waiting process also positive. The third thing is, as we develop patience, our relationship with Guruji involves progressive change in our life. So with that, I'll take a pause and ask Auntie Ji to take over. Jai Guruji, Shukrana, Shukrana Guruji. Thank you so much, Anju Auntie, to have such a beautiful reading and expressing your beautiful expressions and your satsangs in a very clear-cut manner, which was very understandable for all of us. It is actually the right thing that Guruji gives in at the proper time only. एक वो कहते हैं ना कि ट्रेलर देखने के बाद में पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, वो वाली सिचुएशन हो जाती है हम सबके साथ में कि मांगो नहीं मानो, तो गुरुजी के ऊपर जब छोड़ देते हैं डोरे तो वो अपने आप ही सब कुछ संभाल भी लेते हैं और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं कि हम
आज जहाँ इतनी भीड़ में इतने लोग हैं, इतनी करोड़ों की संख्या में पॉपुलेशन है, वहां पर हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सब कितने ग्रेटफुल हैं कि गुरुजी ने हम सबको उस भीड़ में से पिक किया और हमारे को चुन करके अपने साथ जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। आगे भी आपने ही संभालना है और आपने ही करना है, तो बहुत बहुत शुक्राना। कमलेश आंटी जी, if your health allows, I would request that if you can just pour in some more blessings, Yes. if your health only allows, aunty ji. I Jai would Guru just Ji. love to hear. Jai Jai Guru Guruji, Ji. aunty. Jai Guru Ji. What a coincidence it was. A thought came to me last night. कि सुरेश अंकल ने शुरू विच बड़ा छोटा जिहा चैप्टर दे दिता अंजू नूं पढ़न वास्ते, और वड्डे जे कोई चीज दिती नहीं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं सुरेश नूं कहांगी अंजू नूं होर कुछ पढ़न वास्ते दे दे। द मोमेंट आई ओपनड Suresh uncle's message today, and to my surprise, I saw Anju's name written into it. My God, my joy became 100-folds because Guruji just listened to me, and her name was there. Thank you, Suresh uncle. And auntie ji just wanted to add into your words, since it is a very interactive session. We love to hear from you, and we love to, interact like as if we are sitting face to face to each other. Like this was the same thing in my mind. I was like, Suresh uncle called me up day before yesterday that who is the reader. मैंने कहा uncle Anju aunty का है, but I'm not able to connect through her because the number is going on the ringing side, but nobody is picking up. I don't know what will happen, whom we will now give up the seva. I was messaging Suresh uncle, and luckily, the prayers got answered, and Auntie ji picked up the phone, and I was able to have a word with her for confirming the seva of reading. So it was not actually all that coincidence. As you were also worried, we were also worried for the same thing, and Guruji listened to our worries, and we were lucky to have her on the session again. And it is like now rotational seva is going on, so it is like a lucky draw. Wow, we are getting another chance of reading another chapter, so it is always cherry on the cake for all of us, that we all are eagerly waiting for the Sundays. Like everything is left behind in the whole week. Let's focus on Sunday. Who is coming next, and what is the chapter it is coming to, on the reading side. It is such a beautiful experience. I will just share one of the things. When I was given the seva, the Guruji chosen me as the sevadar. Suresh uncle, please unmute yourself. I want to have your words also for that thing. He gave me the by Guruji's agya, he gave me the seva of focusing on the dates on which the particular chapters will be read. So I was like, uncle, I cannot do it. I am unable to, because I was not able to do it in the particular deadline which I wanted to do. But then again, I prayed to Guruji, as we always know that it is he who is the doer. We are just mere puppets. आंटी रात को 2 बजे गुरुजी ने ऐसे सिर पे टन करके उठाया कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ, और फोन के ऊपर ही साथ में आपका पीडीएफ बुक का ओपन था, और साथ में ही नोट्स बनवा रहे हैं मोबाइल पर ही, इस डेट पे ये वाला चैप्टर, इस डेट पे ये वाला चैप्टर, एंड 2 o'clock आई रेड द होल बुक. ऐसे वो बुक के अंदर में, मतलब एक चैप्टर पढ़ के अच्छा थोड़ा सा और, अच्छा थोड़ा सा और, अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, पूरा पढ़ लेती हूँ, करते करते 4:30 the whole book was read with such a beautiful experience in that ब्रह्म मुहूर्त. और उसके बाद वो पूरे की पूरी स्केड्यूलिंग बनवा दी गुरुजी ने मिनटों के अंदर. And when it was being shared to uncle ji in the morning itself only, he called me up, अब हो गया तुमसे? मैं अंकल मुझसे नहीं हो सकता था, वो गुरुजी ने करवाया. तो इट इज सच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आंटी जी, जब आपकी बुक रीडिंग के लिए आई, जब आपकी बुक हाथ में गुरुजी ने करवाई, इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हुए कि मतलब जितना कहेंगे ना उस चीज को, वो लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए.
मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल 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 बुक कि जिसमें अपने सच्ची के अपने मन के भाव हमारे पूरे के पूरे वो एक ग्रैटिट्यूड की तरह कि शुक्राना करें भी जितना भी करें वो कम है। वो सागर के अंदर से जितना मर्जी निकाल लो तब भी सागर कम नहीं होता। वही हमारे गुरुजी की बेअंत कृपा है जो हम सबके ऊपर आ रही है, और वही बेअंत कृपा आप पे देखेंगे तो आज इतना इतना ब्लेस्ड फील होता है आंटी कि आप लोग जैसे अभी कहते हैं ना घर के जब बड़े आते हैं तो घर की रौनक चार चांद और उसमें लग जाते हैं। तो इट इज लाइक दैट व्हेनेवर यू कम टू दिस फैमिली दिस सेशन ऑफ संडे वी ऑल फील सो इलेटेड, वी ऑल फील सो ओवरवेल्म्ड कि वाओ आज हमारे घर के बड़े आए हैं हमारे साथ। सो आई विश यू गुड लक, गुड हेल्थ, आप बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग रहो और हर संडे को हमारे साथ में आओ और हम सब मिलकर के खूब सारी गुरुजी के सत्संग शेयर करें, उनकी बेअंत कृपा ले और उस अमृत वर्षा में हम सारे पूरे अच्छे से नहा धो लें पूरा का पूरा। थैंक यू सो वेरी मच कमलेश आंटी। Thank you so much, so much, so much. Lots of love to you. Lots of love to Thank you. you. The other day Suresh I uncle. heard, Sorry. I was listening to one of the shabads of Rinkuji, Mhm. and उस शब्द में it was, he said, आज जो आप इस सत्संग में बैठे हो, इस सत्संग में आए हो, ये आपके पिछले जन्मों की कमाई। And that was so beautiful, and I really loved that line कि हमने पिछले जन्म की इतनी कमाई है, हम एक जन्म की नहीं, पिछले पिछले बहुत जन्मों की कमाई है जो आज गुरुजी ने मुझसे बुक लिखवाई। और लिखते तो बहुत लोग हैं, सब कुछ करते हैं, बट टू गिव अ प्लेटफॉर्म to a book and which is read worldwide is Guruji's blessing. Guruji blessed Suresh uncle, and that's how it was executed. Thank you, uncle, for giving me this opportunity, and Guruji के साथ आपसे मिलने का। एक गुरुजी हैं जो माध्यम बने आपको और मुझे बुलाने का। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। कमलेश आंटी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन बिटवीन। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शुक्राना गुरुजी महाराज का, बस ये सब गुरुजी की कृपा ही है, ये सब गुरुजी की मेहर ही है कि जो भाव देते हैं हम सबको, हम सब संतों को, और बिना उनके भाव से तो हम सोच रहा तो दूर, हम लोग सोचने की तरफ बढ़ते भी नहीं है ना। ये सब गुरुजी की कृपा ही है जो उन्होंने हम सबको बख्शी है। और इसके साथ ही मैं अपना नीलिमा आंटी ने जो अभी बोला है, मैं 200% एंडोर्स करता हूँ कि वट एवर शी सेड initially. Nilima aunty, I'm sorry if I'll be telling something wrong. Initially she was reluctant to act as an admin and coordinate the activities. लेकिन जैसा नीलिमा आंटी ने बताया कि जब रात को 2 बजे गुरुजी महाराज ने उनको भाव दिया, उसके बाद ना सिर्फ ये सेशन बल्कि नरेंद्र ढांड अंकल जी की जो बुक की 7 लैंग्वेजेस में रीडिंग हो रही है, उसकी एडमिन भी नीलिमा आंटी ही हैं, है ना। तो ये गुरुजी का भाव ही है कि जो आने वाले दिनों में और शर्मा अंकल की बुक्स आएंगी, उषा सिंह आंटी की बुक्स आएंगी, उन सब की एडमिन नीलिमा Uncle, I am just the youngest child of the family. You all are the head mentors. Either it is you, Kamlesh aunty ji, Narendra Dhan uncle. The head of our family is our Pyare Guruji. He is the only doer. I am not doing anything. Please let me be on the youngest side only. मेरे को सबकी प्यार और डांट ज्यादा अच्छी लगती है लेनी. And Kamlesh aunty ji, on a personal note, I would request you to please आप संडे को चाहे 5 मिनट के लिए आओ, बट आप आना जरूर. और गुरुजी से बहुत सारी प्रेयर्स कि वो आपको हमेशा हेल्दी रखें और ऐसे ही हैप्पी रखें.
जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सुरेश बात अंकल को, जैसे सुरेश अंकल हमारे लिए फटाफट से सेवा लगा देते हैं, आपसे सुरेश अंकल की भी गुरुजी फटाफट से सेवा लगवा दें, ताकि सुरेश अंकल भी जल्दी से अनम्यूट करके. सुरेश अंकल would request you to please pour in your blessings and your experiences on the chapter, please. जय गुरुजी. जय गुरु जी। नीलमा आंटी, अभी मेरे को 3-4 संगतों के मैसेजेस, पार्टिसिपेंट्स हैं, दे हैव मैं कुछ थोड़ा सा बोलूंगी. हाँ जी, प्लीज. जैसे अंजू माता आंटी ने कहा कि वाई मी, जो भी कुछ होता है, वाई मी, वाई अस. So whenever we are hurt emotionally, we keep thinking about it. More we think, more uneasy we feel. Then we try to open our heart in front of others. There are many who understand you, many won't. You feel even my disappointment, finally when you feel there is no one to heal your wound, you distance yourself from others. It is time of self-realization. When tell yourself what you want to heal and begin to shed the feelings of disappointment, resentment, and start to connect with your inner self and heal the wound. Others can only help you to process of healing, but it is only you who can cry. Now, how you can heal yourself? He says on Simran, repetition of the tongue is better than that of the rosary, the mala. And then it is the throat, it is the superior to one by the tongue. Similarly, that it is the heart is more beneficial than the one in the throat. The fifth via, it is the navel center's attempt by the yogis alone. Simran, by the means of the rosary or by the tongue, is considered to be the lowest form of repetition. Then in the throat, and that with the heart being distinctly superior. However, all the types of repetition, when you're accompanied by one-pointed attention, yield good results. They clean the mind and bring some measure of peace. But the soul currents do not collect at the eye center. So there is little gain in the spiritual development. It is for the reason that the saints start from the very grassroots of the thing. They advocate repetition by the tongue of the soul. This way, we gain the means of making the mind still. Saints call this the Simran of the soul. By following this method, the mind does not roam around. Here it is not the case of the repetition continues and the mind strays out, but happens in the method of described earlier. The Simran is the soul awakens the inner consciousness and enables one to hear the Shabad or the sound current, which means the real peace and bliss. इसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण. What meditation can do? An old farmer lived in the farm in the mountains with his grandson. Each morning, the grandpa was early morning and sat for the meditation. His grandson wanted to be just like him and tried to imitate him in every way he could.
One day the grandson asked Grandpa, try to meditate just like you, but the thoughts disturb me, and what I do not understand, I forget as soon as I come out of meditation. What good does the meditation do? The grandfather quietly turned with putting coal in the stove and replied, take this coal bucket down the river and bring me back the basket of water. The boy did as he was told, but all the water leaked out before he got back to the house. The grandfather laughed and said, you have to move a little faster next time, and sent him back to the river with the basket to try again. This time the boy ran faster, and again the basket was empty before he returned home. Out of breath, he told his grandfather that it was impossible to carry water in the basket, and he would get bucket instead. The old man said, I do not want the bucket in the water. I want basket to the water. Are you just not trying hard enough? And then he went out the door to watch the boy try again. At that point, the boy knew it was impossible, but he wanted to show his grandfather that even if he ran as fast as he could, the water would leak out before he got back to the house. The boy again dipped the basket in the river and ran hard. But then he reached his grandfather and the basket was empty again. Out of breath, he said, see, Grandpa, it is useless. So you think it is useless? The old man said, look at the basket. The boy looked at the basket, and the first time he realized that the basket was different. It had been transformed from a dirty old coal basket to a new clean inside out. Son, that is what happens when you meditate. You might not understand or remember everything, but when you meditate every day, thoughts start to diminish like dirty coal basket, transformed to clean. In the same way, you tend to be pure. You will be changed inside and out. That is the work of the meditation in our lives. Never give up spiritual practice. By doing spiritual practice daily, all heaviness and unnecessary things tend to fall and you start feeling light. This is the indication that you are evolving. Slowly you will feel peace and calmness within you. Instead of reaching, you start responding. So, Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ. So this was how Guruji chamkawed us from inside and out. And he made us a better human being. And that nothing affected us in our lives. Everything, problems were there, but the problems became so mild that we could face the problems in a lightful manner. Thank you, Jai Guruji. Suresh uncle, sorry for interrupting. Now you can go ahead there. Jai Guruji. जय गुरु जी. नहीं आंटी, इंटरप्शन नहीं, ये तो हमारे
धन भाग थे कि जो कि आपको सुना, है ना. वी ऑल आर फॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट ऑफ योर एवरेज हेल्थ, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया. बल्कि मैंने दिन में तो आपको दिन में मैंने आपको वो सजेस्ट किया था कि अभी आप आराम करो, है ना. आई नेवर because I in this didn't know I was very sick, because when the doctor said you have to go and get the echo done, when I got the echo done and I came back and gave reports to my doctor, he said you had a silent heart attack, which I said I even don't know, but I was very unwell. So that's how I know. And it's okay. Thank you so much. But I love listening to you, Suresh. Okay. जय गुरु जी. आंटी अभी मेरे को 3-4 रिक्वेस्ट आई हैं अंजू माटा आंटी के लिए. सिंस वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं अंजू आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंजू आंटी, मेरे को ये रिक्वेस्ट आई है कि अंजू माटा आंटी को बोलिए हिंदी में कुछ सत्संग करेंगे 10-15 मिनट के लिए, प्लीज. दिस इज ऑल ऑफ दिस इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस. अंजू माटा आंटी, प्लीज ओवर टू यू. आंटी हिंदी में करना है. अच्छा, कोई भी सत्संग? एनी सत्संग आंटी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. नीलिमा आंटी विद योर परमिशन. नीलिमा आंटी विद योर परमिशन. Uncle, please. It's all Guruji's show. We are nobody. अंजू माता आंटी प्लीज अपना सत्संग सुनाइए प्लीज, क्योंकि ये जो संडे का दिन होता है हमें लगता ही नहीं है. मेरा पर्सनली तो बिल्कुल मन नहीं करता कि ये सेशन खत्म हो, ये चलता रहे. जय गुरुजी. श्योर आंटी. थैंक यू कमलेश आंटी. एंड आपका सत्संग सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि रात को आपको लगा कि आप सुरेश वासन अंकल को बोलोगे कि अंजू को कुछ और दे, और आपने ये पढ़ लिया. और मेरा सत्संग ये था, कल आप मुझसे मिल नहीं पाए और आज मैं आपसे मिल ली, वर्चुअली सही मिल ली. थैंक यू सो मच. और ये जान के बड़ा दुख हुआ कि आपका साइलेंट अटैक आया था. होप यू कीप वेल एंड again wishing a very very speedy recovery and take rest. ओके. सत्संग का ऐसा है कि मैं आपको बता देती हूँ कि एक सत्संग बताऊंगी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी थी. तो ये सत्संग मैंने बहुत बार बताया है सत्संग में, बट फिर भी ये सत्संग मेरे दिल के बहुत नज़दीक है. उसके पीछे रीजंस है, क्योंकि मैं जुड़ी. सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं गुरुजी से जुड़ी, तो इससे बड़ा सत्संग हो नहीं सकता. इसकी वजह से मैं जुड़ी. और दूसरा सत्संग ये है कि ये सत्संग मेरे फादर से एसोसिएटेड है. तो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लव हिम लाइक एनीथिंग. लाइक ही यूज्ड टू बी माय वैलेंटाइन. आई यूज्ड टू विश हिम ऑलवेज. सो इसीलिए मैं ये सत्संग बताती हूँ. आज से 8-9 साल पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो उस टाइम पे मैं ऑफिस के काम से बहुत ट्रैवल करती थी, फ्लाइट में आना जाना. नॉर्मली मैं फ्लाइट ब्रेक करके लेती थी. तो जब आप ब्रेक करके फ्लाइट लेते हो यहाँ से लंदन से यूएस एंड ऑल, तो आपके साथ जो आपके साथी होते हैं वो बदलते चले जाते हैं, बिकॉज कोई अलग बैठेगा आपकी सीट के साथ. उस बार क्या हुआ, मैंने फ्लाइट ली डायरेक्ट न्यूयॉर्क से, और डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया की थी, और मेरे साथ एक आंटी बैठी जो गुरुजी को बहुत मानती थी. तो सिंस वो डायरेक्ट फ्लाइट थी तो 12 घंटे वो आंटी ही मेरे साथ थी. तो वो आंटी गुरुजी की बहुत बड़ी भगत थी. तो वो रास्ते भर मुझे गुरुजी के सत्संग बताती रही, और मैं उस टाइम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी ऑनेस्टली. तो मैं सुनती रही, एंड आई थिंक शी यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे. तो वो बोलती रही और मैं सुनती रही. बड़ी क्यूरियोसिटी जागती रही. वो बोलती रही कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ. अगेन मैं सुनती रही कि कुछ तो पावर है जो इतनी बातें आंटी बता रही हैं. मतलब उस टाइम तो मुझे भी नहीं मालूम था कि आंटी बोलते हैं. मैं घर पहुंची, मैंने यही सेम बात अपनी मम्मी को बताई कि आज इस बार जब मैं आई ना फ्लाइट से, तो एक आंटी मिली, तो मुझे पूरे रास्ते एक गुरुजी के बारे में बताती रही कि छतरपुर में ही है वो गुरुजी. नॉर्मली मैं बिलीव नहीं करती थी गुरुज में. मैं शिव जी की बहुत बड़ी भगत हूँ शुरू से ही, बचपन से ही. मैं बहुत फास्ट भी रखती थी, शिव जी के सावन के भी रखती थी. तो मैंने आके बताया मम्मी को, और मेरे डैड उस टाइम पे बेड रेस्ट पे थे. सो ही वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम कॉल्ड PSP, व्हिच इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ पार्किंसन.
प्रोग्रेसिव उनके सिंड्रोम होते थे, जिसमें उनकी ज़ुबान चली गई थी, उनका मूवमेंट चला गया था, उनका खाना भी पेट में पाइप से जाता था। तो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज थी, उनकी बॉडी एकदम स्टिफ़ हो गई थी, ही वाज़ बेड रिडन एंड वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो बहुत एक्टिव थे, ही यूज्ड टू डू योगा। वेरी एक्टिव इंडिविजुअल, वेरी लर्नेड, लाइक you get up at 4 o'clock in the morning, he would be reading something, Gita or something, or all kind of literature you can think of. He was a very learned human being. So he was a role model for lot, not only for me, like lot. So जब आप इस ऐसे इंसान को आप बेड पे देखते हो जो बिल्कुल लाचार हैं, उनका ब्रेन सही चल रहा था, सब समझते थे, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे, सुन सकते थे पर बोल नहीं सकते थे। तो आप बहुत टूट जाते हो। तो मैंने आके बोला मम्मी को कि मेरे को फ्लाइट में एक लेडी मिली थी, वो पूरा रास्ता मुझे यही बताती रही, गुरुजी एंड ऑल, तो आपको कुछ मालूम है? देन माय मदर सेड हाँ, मुझे मालूम है, हम एक बार मंदिर भी गए थे पापा को लेके मेरी कज़िन के साथ। ओके, हो गया, ठीक है जी, आप जानते हो, हम जाएँगे कभी। देन आई टॉक हैड वर्ड विद माय हस्बैंड कि आप लेके चलो मुझे, सुना है। सो माय हस्बैंड इज़ आल्सो वेरी नॉन काइंड ऑफ, उस टाइम पे इतने भगत नहीं थे, मतलब ही नेवर यूज्ड टू फॉलो। हाँ, बट हाथ जोड़ लेते थे बिकॉज़ ऑफ मी पुशिंग कि हाथ जोड़ लिया करो सुबह-सुबह। सो हम चले मंदिर और हम जब दोनों मंदिर गए तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेज़िंग था। वी बोथ फेल्ट कुछ है यहाँ पे। लाइक वी बोथ फेल्ट सो मच एनर्जी और देन नो लुकिंग बैक, आगे घर हम दोनों को लगा कि कुछ है पावर एंड हमको विश्वास आना शुरू हो गया। ठीक है, चलती गई ज़िंदगी। तो एक बार मैं अपने डैड से मिलने उनके घर गई और मैंने देखा पापा मुझे देख रहे थे और मैं उनका हाथ पकड़ के बैठ गई और मैंने ना एक पुनीत एक सिंगर है, आप जानते होंगे, उनका भजन है शुक्र करा गुरुजी, शुक्र करा, तो मैंने वो बजा दिया और वो बहुत प्यारा शब्द है, कीर्तन है, जो भी भजन है, उसमें यही होता है कि आपके पास जो भी है, उसके लिए शुकराना, ये शुकराना। तो मैं वही देखती रही, डैड देखो आपके बच्चे सेटल हैं, शुक्र करो। आपने बहुत अच्छा बना के दिया लाइफ में, बहुत जोड़ा, बच्चों को कोई वो नहीं करी। तो मैं वही उनको सब बोलती रही, वो सुनते रहे, हाथ पकड़ के बैठी रही। फिर उसके बाद भजन खत्म हो गया। ही केप्ट ऑन वॉक, देखते रहे मुझको। दुखी रही बहुत ज़्यादा, पर मैं फिर घर आ गई और घर आने के बाद मैंने गुरुजी को, मेरे पास इतना बड़ा स्वरूप तो था नहीं, जो भी था मैंने उनके सामने उनको बोला। अ, मतलब गुरुजी अगर आप हो, जैसे सब बोलते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, अगर आप हो, तो आप या तो मेरे डैड को ठीक कर दो या आप उठा लो। सो ऐसी हालत में उनकी देख नहीं सकती, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, वेजिटेबल की तरह आप एक बेड पे पड़े हुए हो और दिमाग चल रहा है, आप कुछ बोल नहीं सकते, वेरी पेनफुल सिचुएशन। एंड संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसी रात को अराउंड डेढ़ 2 बजे मेरी मदर का फ़ोन आता है कि पापा ने शरीर छोड़ दिया। सो ही हैज़ लेफ्ट बॉडी, तो उस बात से कि सेम डे आपको आपने माँगा और आंटी ने जो बोला कि टाइम जब आता है, गुरुजी नोज़ हिज़ टाइम। तो गुरुजी का वो टाइम डिसाइड कर लिया था पापा को ले जाने का, मुझे वो इंडिकेशन दे दिए थे, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैं उनसे मिलने गई। ये सारा कुछ जो हुआ उसी दिन सब कुछ हुआ, तो वो टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया था। सो गुरुजीज़ नो व्हेन इज़ द टाइम, एज़ पर द चैप्टर ऑल्सो। कोई किसी के पास ये ताकत नहीं है जो किसी को, इंसान को जन्म या दे सके या ले सके, वो तो भगवान ही कर सकता है। तो ऐसे सभी बोलते हैं कि शिव जी महाशिव हैं और बिल्कुल महाशिव हैं। वो ले गए मेरे डैड को अपने साथ, दुःख बहुत हुआ, बट वो उनके लिए ठीक था, तो वो गुरुजी के साथ गए हैं। तो मेरा ये सबसे क्लोज़ सत्संग है, मैं बहुत जगह सुनाती हूँ क्योंकि इस सत्संग की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी, मुझे एक गुरु मिले। उसके बाद धीरे-धीरे मेरे घर के सारे लोग जुड़े, मेरे मायके साइड, मेरे ससुराल साइड सब जुड़ गए। सो इससे बढ़िया ब्लेसिंग और क्या है। पापा को मुक्ति दे दी अ, और उसके बाद नो लुकिंग बैक। सो हमारे ऐसे बहुत सत्संग है, बट ये सत्संग मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। जैसे आपने बोला आंटी, मैंने सुनाया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अ और हो तो और भी सत्संग सुना सकती हूँ अगर आप चाहेंगे तो। आंटी 10 मिनट और, अच्छा लगा बहुत। ओके, थैंक यू, ज़रूर अंकल। एक सत्संग, एक आप लोग बोलोगे बड़ा छोटा है, बट इम्प्रैक्टिकल लगता है कई लोगों को, बट ये बहुत ही प्यारा-सा सत्संग है ये। वो मटेरियलिस्टिक सत्संग है, बट गुरुजी से जुड़ा हुआ है।
हम ना ऐसा टाइम आया कि मैं हर महीने के सेकंड सैटरडे को सत्संग करने लगी। सिंस मैं वर्किंग हूँ, तो सैटरडेज़ को ही टाइम मिलता है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम हर महीने के सेकंड सैटरडे को करने लगेंगे सत्संग। तो करा खूब 1-2 साल हमने किया, फिर वो कोविड आ गया तो बंद हो गया। तो ऐसा होता था कि अगर कभी बड़ा कर लेते थे, कभी छोटा। जब छोटा करना होता तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैठ के कर लेते थे घर में, अपना 2 घंटे की लगाई और बैठ के सुन लेते थे। यही छोटा-सा प्रसाद बनाया, सत्संग हो गया। तो ऐसे ही एक बार पता नहीं बहुत बारिश थी और हमें सत्संग करना था, सेकंड सैटरडे था। तो बहुत बारिश आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड का वो मन नहीं हो रहा था कि जाके, और हमारा ये बड़ा फिक्स था कि हम ज़्यादा बड़ा नहीं फैलाएँगे, फूल ले आएँगे, स्पेसिफिक फूल जो आप गुलाब के, गेंदे के और व्हाइट फूल होते हैं, वो ले आते थे हम ऐसे पन्नी में डाल के, जब हम छोटा करते थे। तो हम ले आएँगे और अपना दरबार लगा देंगे। दरबार वो परमानेंट बना हुआ था घर में, तो वो लगा देंगे, थोड़े से फूल से रंगोली बना देंगे, बैठ जाएँगे। तो एक दिन बारिश बहुत आ रही थी, सेकंड सैटरडे था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि बारिश बहुत आ रही, कैसे जाऊँ, पता नहीं फूल वाला बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, और मन में भी वहम भी आता है कि जैसे होता है ना कि करना है, ऐसे ही करना है, छोटा-सा मान लिया। तो अब अंकल उठे, अंकल ने दरवाज़ा खोला, चलो देखता हूँ, जाता हूँ, क्या करता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोला और बाहर वही सिमिलर पैटर्न में, जिस तरह से वो फूल जितनी क्वांटिटी में हम लेते हैं और जितने ही पॉलिथीन में आता था फूल, वैसा ही एग्ज़ैक्ट पैकिंग बनी हुई हमारे घर के डोर पे लटक रही थी। एंड इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग, लाइक अंकल का जाने का मन नहीं था, बट जाना भी था क्योंकि बारिश थी, पर वो अंकल गुरुजी खुद चला रख के चले गए। अब आप सोचेंगे कि ये तो कुछ भी हो सकता है, बट जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे आना मतलब ऐसा होता है कि आप पता नहीं कहाँ पे जा रहे हो, इतनी सिक्योरिटी है। पहले गार्ड आपको फोन करेगा बाहर वाला, फिर आपको अंदर फोन करेगा गार्ड, नीचे से इंटरकॉम करेगा, फिर आपकी ऐप आएगी, उसमें आएगा मैसेज, फिर आप अप्रूव करोगे। तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, नोबडी आस्क्ड मी कि देने जाना है फूल। फिर हमने सोचा कि कोई आएगा कि मेरे घर का फूल कोई छोड़ गया है यहाँ पे गलती से, कोई ऐसा नहीं। अ, हमारे फ्लोर पे सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, वो भी फूल नहीं मँगवाती थी। तो कैसे आया, कैसे गुरुजी ने सुना, छोटी-सी बात, बट इट गिव्स यू अ मैसेज कि जो तुम्हें करना है वो तुम करोगे, तुम्हारा मैं हूँ ना। तो वही वाली बात गुरुजी ने प्रूव कर दी, वो हमने फूल लिया और हम दोनों खुशी से पागल, और अपना सत्संग किया हम लोगों ने। सो ये एक हमारा एक और सत्संग है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे बेटे के, एक टाइम पे बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है। उन दिनों में जब मैं जुड़ी थी नई-नई, तो 2 मेजर एक्सीडेंट हुए थे गाड़ी से। एक बार पूरी गाड़ी घूम गई थी मेन फरीदाबाद रोड पे। एक एक बीएमडब्ल्यू ने जो मारी, अ, तो उसकी घूम गई, तो उसके वो और उसके फ्रेंड बैठा था, उसपे खरोंच तक नहीं आई। एक बार एक और हुआ कि पेडेस्ट्रियन पे लगी गाड़ी, तो बिल्कुल बहुत मतलब आई थिंक लाख के करीब खर्चा हो गया, डैमेज हो गई, बच्चों को खरोंच नहीं आई। 3-4 बच्चे थे। सो पॉइंट इज़ कि आपके गुरुजी आपके साथ रहते हैं। उसके बाद नो लुकिंग बैक, एंड अब यही है हमारे ईष्ट और यही है हमारे गुरु, यही है हमारे देवता, और ज़िंदगी चल रही है। हो रहा है तो भी ठीक अच्छा, नहीं हो रहा तो भी ठीक अच्छा। और आज मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, तो वो यही कह रही थी कि अगर आप पापा की ही बात कर रहे थे हम, कि अगर मेरे फादर ने जाते हुए बहुत कष्ट भोगे हैं, तो वो इसी जन्म में ही अपने कर्म कटवा के चले गए हैं। और आपको मालूम होगा कि एक आपने सुना होगा आत्माराम करके, एक जब डेथ होती है तो आप देखते हैं, तो हम अपने डैड के जब वहाँ गए हरिद्वार में, जब आत्माराम क्रिमिनेशन के बाद निकला, हमने देखा बिल्कुल शिव की शेप में वो आत्माराम था। तो सबने वही देखा कि हमने ऐसे नहीं देखा, नॉर्मली वो टूट-वूट जाता है। सो सबने यही बोला कि वो उनको मुक्ति मिल गई है, गुरुजी ले गए हैं और उन्होंने कष्ट भोगे हैं लास्ट के कुछ सालों में, वो कर्म कटवा के गए हैं अपने। सो ही इज़ द ओनली वन हू इज़ देयर फॉर अस, एंड ही इज़ द एंकर। वही हैं जो हमें एंकर, हमें स्ट्रॉन्ग खड़ा कर रखा है, जिसकी वजह से हम बड़े आज कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं कि हमारे आस-पास जो लोग हैं हमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप को बहुत लकी फ़ील करते हैं। जब भी संगत परिवार से मिलती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। कल मेरे घर में सत्संग था, मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो मैंने रखा था एक छोटा-सा सत्संग। संगत परिवार अब ऐसे बैठ जाते हैं हमारे घर में, सत्संग खत्म हुए 10 बजे, 7 बजे हम बैठे हैं, 11 बजे तक बातें हो रही हैं, हँसी-मज़ाक हो रहा है, गुरुजी की बातें हो रही हैं। ये ऐसा परिवार बन गया है कि ये सब चीज़ें आपको इतनी पॉज़िटिविटी देती है ना, कि दुनियादारी एक तरफ, गुरुजी की दारी एक तरफ। तो यू फील वेरी हैप्पी, लाइक आपके ऑफ़िस में भी बहुत पॉलिटिक्स होती है, सब कुछ होता है, बट आप फिर भी स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हो कि एक है समबडी जो आपको देख रहे हैं।
यू डोंट डू द बैड थिंग, आप गलत कर ही नहीं सकते, ही स्टॉप्स यू डूइंग। वो एक ऐसी चीजें डाल देते हैं, आप कभी कुछ गलत बोलने की कोशिश भी करो किसी को तो एकदम रुक जाते हो कि नो, दिस इज नॉट व्हाट गुरुजी हैज टॉट अस। तो आई थिंक जुड़ने से आप एक अच्छे इंसान बनते हो, उससे अच्छा और क्या चाहिए। आप इंसान जीवन में आए हो और अगर आप इंसान ही नहीं हो तो फिर फायदा ही नहीं है। तो it makes you इंसान, and we are now Guruji's इंसान, we are still learning on this process, but thanks to Guruji for connecting with us and holding our hand, and this is a request to Guruji, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। 5 मिनट रह गए हैं, कोई किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कमलेश आंटी आपको कुछ कहना हो? Over to you, Kamlesh aunty. I think I have done the justice. Thank you so much. जय गुरु जी महाराज। जय नीलिमा गुरुजी। आंटी, गुरु पवरा की तरफ से गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हैं। अब प्लीज आगे दिलवाएं। जय गुरु जी। मैं इसी के साथ कमलेश मेहता आंटी जी, अंजू माटा आंटी जी, नीलिमा आंटी और गुरु परिवार का सबका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का कि इतनी प्यारी संगत और इतनी अच्छी संगत की आपने अंजू आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू नीलिमा आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना इतने प्यारे से पल का गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी दा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। शुक्राना कमलेश आंटी जी। शुक्राना सुरेश अंकल फॉर गाइडेंस। शुक्राना अंजू आंटी फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग एंड ब्यूटीफुल सत्संग शेयरिंग। शुक्राना सारी गुरु रूप संगत का जो जुड़े हमारे साथ में और जिन्होंने अपने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ली गुरु जी से इन सत्संग्स के थ्रू और इस रीडिंग सेशन के थ्रू। अब हम सब गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। यू ऑल कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेक आज्ञा। जय गुरु जी। जय गुरुजी। शुक्राना आज्ञा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बहुत गुरु बहुत जी। शुक्राना गुरुजी। आगे अनंत